Hello, good morning children. How are you? I hope you are fine. As we have just completed the chapters, the only one chapter was left, that was the positive health. So the same chapter today we are going to discuss. Got it? So before I go out to tell you about the chapter, let's discuss about the text, or we can say Subhra Dutt. The writer of the chapter is Subhra Dutt. These are the word meanings. And about the text, what we are going to discuss about this chapter. Positive health has been taken from the complete health encyclopedia. यानी जो text है ये लिया गया, that is taken from the book The Complete Health Encyclopedia, written by Subhra Dutt, a notable physician. She argues that positive health is a matter of discipline, daily routine. Yes, absolutely. If we will not be in discipline, how can we get positive health? That is why she is saying it is a matter of discipline, daily routine. Yes, हमारा routine अच्छा होना चाहिए, including good eating habit and tension free mind. Yes, if our mind is free from the tension, then we will get less diseases. Okay, and our routine should be good. People in developed countries have achieved better physical health. यानी developed countries में, India is not a developed country, that is a developing country. But the people who are living in developed countries, they got good health, but their mental health is poor. But mentally they are weak. She believes that homemade remedies are very effective to treat many diseases. And again the writer is saying कि the homemade remedies, जो घर पे उपचार की जो चीज़ें बनाई गई हैं, दवाइयाँ बनाई गई, they are very effective to treat many diseases. They can they can be very useful for us to keep us far from the diseases. So too much depends on doctors is undesirable, and we should not depend on doctors. That is also undesirable. This is not a good thing that we should depend on the doctors. Positive health in children sometimes depend on the attitude of their parents. Yes, absolutely. Because children don't know what is right and what is wrong, and completely depend on the parents or the teacher, we can say. That how would they motivate them, how would they try to make them to live their life. That is completely depend on the parents. If the parents put too much pressure on their children to achieve instant success, there should not be any pressure on the children to get the success. If parents are doing that, they become distressed and begin to take drugs. Yes, absolutely. The children would become distressed and they can go into wrong way of the life, that is to take the drugs. So that is the text which we are going to read. That is written by Subhra Dutt, a notable physician, very successful personality, we can say. She is telling us that we should take good habits, we should take good eating habits, we should be punctual, we should be having a good routine, and parents have to be more, we can say awakened about the children. They have to be more responsible. That is why she is saying these things. Is that clear? And now I'm going to start the chapter. Health is a positive state of physically and mental well-being. Yes, absolutely. If we are, we can say, physically or mentally not good, then our health is poor. If we are good, if we are fit, then our health is not good. When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content, means we can say satisfied. When we feel secure by being physically healthy and free from diseases, by feeling content, then we will feel satisfied. And by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. And you know what the writer is saying? If we want to get a state of positive health, we have to live in a comfortable and clean environment. Yes, absolutely. If our surrounding is not good, if our surrounding is dirty, how can we live a good life? It is impossible. Yes or no? So
that is very bad effect. So we have to live in a good surrounding. We are in a state of positive health. Our close and harmonious interactions, friendly जो instructions हैं with family members, maybe neighbors and friends help us to stay well mentally. Yes, absolutely. कह रहा कि एक होती है mentally fit और एक होता है physically fit. Physically fit means our surrounding should be neat and clean. There should not be any diseases or surrounding अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए. And mentally means we have to be ready. We have to prepare ourselves to make a contact with the friends. We should make an interaction with family members. We should make an interaction with the neighbors. There should be a good interaction. तभी हम mentally fit हो सकते हैं. According to this definition, very few people in the world enjoy positive health. The writer is saying कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो बताई है कि मेंटली कैसे फिट होते हैं और फिजिकली कैसे फिट होते हैं, वेरी फ्यू पीपल आर इंजॉइंग गुड हेल्थ. इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर टू बी weakening. Yes, absolutely. The people who are living in the developed countries and rich companies, we can say countries, they are having a weak relationship with their family members. They are weakening, टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं. Neighbors may be stranger and the neighbors are also strangers to each other. क्योंकि वो उनका क्या होता है, वो न किसी की लाइफ में हस्तक्षेप करते हैं, न वो चाहते हैं कि कोई उनकी जिंदगी में आके हस्तक्षेप करे. In developed countries, neighbors are stranger and friendship is sometimes restricted to business contact. और फ्रेंडशिप जो उनकी होती है वो केवल मात्र बिजनेस तक सीमित रहती है. They are not inviting them to their home maybe. Okay. In those countries, environmental conditions have improved considerably. Yes, absolutely. ये जो विकसित countries हैं, their environmental condition is good. No doubt about that. The population have achieved a better nutrition status. Maybe the people who are living there, they are eating nutritious things. बेटर न्यूट्रिशन स्टेटस, उसका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो बेटर हो सकता है, उनका इन्वायरमेंट बेटर हो सकता है. एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ द लाइफ कंफर्ट्स एंड यू नो दे कैन ऑल्सो हैव मनी, प्लेंटी ऑफ मनी, सो दैट दे कैन बाय ऑल द थिंग्स विच गिव देम कंफर्टेबल. एब्सोल्युटली. पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज मे एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ. एंड एट लास्ट द राइटर इज सेइंग कि the people who are living in developed countries, they can enjoy better health. Absolutely. कैसे जो enjoy कर सकते हैं, maybe they can have a good environment, बिल्कुल साफ सुथरा environment हो. Maybe they can have a nutrition status, अच्छा nutrition status हो उनका. Maybe they could have we can say a lot of money to buy the comfortable things, and they can enjoy the better physical health, but they are far from achieving positive health. लेकिन वो पॉजिटिव हेल्थ अच्छी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव हेल्थी बनने के लिए क्या होता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हमें क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. दे आर स्ट्रॉन्ग फिजिकली बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग मेंटली. एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि लोग मेंटली फिट नहीं है. हो सकता है दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, दे कैन बाय द कंफर्टेबल थिंग्स, बट they are having good environment, they are having good nutrition, they are having lot of things, but they are not having family members, they are not having friends. Okay, they don't know who are their neighbors, वो अपने neighbors को भी नहीं जानते. That is why. On the other hand, in developing countries में क्या होता है, the quality of human interaction within families, neighbors and friends are often more positive. Yes, people who are living in developing countries, their interactions with friends, with family members, with neighbors, they are better than them. However, both the environmental and nutrition status of these populations are lower. लेकिन इनमें क्या होता है, the environmental conditions are not equal to the developed countries, and we can say nutrition status is also not good. So the people suffer more from poor physical health. यहाँ क्या होता है, फिजिकली हेल्थ उनकी जो पूर होती है वो बहुत खराब होती है.
ठीक है, कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आप मेंटली फिट नहीं होते, आप फिजिकली फिट होंगे, आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट होगा, पैसा होगा, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन स्टेटस होगा आपका, लेकिन आप मेंटली फिट नहीं होते। और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, आप अच्छे इंटरेक्शन होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, आप मेंटली फिट हो सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली कमजोर हैं। क्यों? वी आर हैविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, हो सकता है हमारे न्यूट्रिशन अच्छे नहीं हो, इन्वायरमेंटल अच्छा नहीं हो, सो दीज थिंग्स। व्हेन अ पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर फिजिकली कोई बंदा कमजोर है तो कैसे फिट हो सकता है, पॉजिटिव हेल्थ उसको भी नहीं मिलती। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। तो हमने पाया कि हम पॉजिटिव हेल्थ हमारे अंदर है ही नहीं, वी आर नॉट हैविंग एनी पॉजिटिव हेल्थ। ओके, दैट वी कैन से दूर जा रही है हमसे, पॉजिटिव हेल्थ है वो दूर जा रही है हमसे, अलग हो रही है। तो ये राइटर ने ये सब कुछ बताया कि डेवलप कंट्रीज में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, डेवलप में कितनी बढ़िया चीज़ है, डेवलपिंग में क्या है। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. Yes, absolutely. कह रहा है कि impossible नहीं है कि लोग पॉजिटिव हेल्थ नहीं प्राप्त कर सकते। Thus, yes, they can get to help achieve this state. But what we have to do, if we want to get positive health, what we have to do? We need an understanding of how our bodies function. हमें समझना पड़ेगा हमारी बॉडी कैसे काम करती है, so that we can keep healthy, so that we can be in the healthy state, healthy mind. We also need a clean environment and healthy food that does not cost too much money. What the writer is saying, we need a clean environment and healthy food that does not cost too much money. बिल्कुल हेल्दी फूड के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता। यस, एब्सोल्युटली द राइटर इज राइट। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल द पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एजुकेट द पीपल, वी हैव टू गिव द एजुकेशन टू द पीपल so that they can lead understanding the relationship between health and positive approach to life. तो वो समझ सकते हैं कि हेल्थ और पॉजिटिव अप्रोच जो होती है लाइफ की, उसमें क्या रिलेशंस है। द राइटर इज सेइंग कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना, दिस इज नॉट द डिफिकल्ट टास्क, यू कैन गेट पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज ए हेल्दी फूड डज नॉट कॉस्ट टू मच money. Yes, absolutely. And by keeping our surrounding clean and neat, we can also get good environment. But for that, what we have to do, we have to educate the people. We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases. कह रहा है कि we should remember कि हमें याद रखना चाहिए, contented mind, a satisfied mind and healthy living means eating healthy things, having good environment can help to keep us free from many diseases. Yes, absolutely. अगर हम ऐसा ही कर देंगे, we can be far from many disease. In some ways, it is easier for the people, और दूसरे तरीकों में, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health. लोगों के लिए आसान हो जाता है developing nations में to achieve positive health, अच्छा health प्राप्त करना, because they have more close-knit social system. They have more close-knit social system. We can say they are bound together. एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं socially, यानी कि जैसे किसी की शादी ब्याह में इकट्ठे होना, किसी की हेल्प करना, socially, सामाजिक रूप से we are having more good relations socially. Got it? With better communication between people, yes, absolutely. The developing countries, people who are living in developed countries, they are having a better communication with the people than do many people in wealthy and developed nations. लेकिन उनसे बेटर हमारे रिलेशंस होते हैं जो डेवलप्ड नेशंस में लोग रहते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होते, उनका अपने पड़ोसी को भी नहीं पहचानते वो, they don't want to interfere in their life and they don't want that somebody would interfere in their own life. So they are keeping away from the people. एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करना. With very little
by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for majority of individual in our communities. रिसोर्सेज का थोड़ा प्रयोग करके हम एक फिजिकली इंडिविजुअलिटी, हम अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं. हु इज सेइंग दीज वर्ड्स? द राइटर. देन वी कैन बी physically and mentally fit by getting positive health. Got it? This does not mean that we do not need medical care. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की जरूरत नहीं है. We definitely need proper medical care under certain circumstances. Yes, absolutely. The writer is saying we definitely need proper medical care under certain circumstances. निश्चित परिस्थितियों में हमें मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है. द राइटर इज सेइंग वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, टीकाकरण एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज. भयानक डिजीज के खिलाफ या उसके विरुद्ध हमें टीकाकरण, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग, ये हमें चाहिए, हमें करनी भी चाहिए. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन. जो भी बीमारी हमारे अंदर हैं, हमें उनको दूर करने के लिए मेडिकल की जरूरत पड़नी चाहिए. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, ऑपरेशन वगैरह से इनका हमें इलाज करना चाहिए. व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब. प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. बच्चे के जन्म से पहले और उसके बाद में उसको प्रॉपर मात्र जो केयर होती है वो मिलनी चाहिए. बिफोर द बर्थ, बिल्कुल क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ अच्छी रहेंगी बच्चे के लिए, क्या चीज़ खराब रहती है, उसके बर्थ के बाद में भी. एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स. और 40 साल के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू आवर रेगुलर मेडिकल चेकअप 40 ईयर्स के बाद. However, there is no need to be obsessed about our health. जरूर नहीं है परेशान होने की. एंड वी शुड यूज आवर ओन स्टिक. हमारा खुद की इंस्टिक्ट काम में ले सकते हैं. एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी. यस, whenever we are feeling sick, whenever we are feeling tired, whatever we are having in our body, if we are feeling uncomfortable, that is our instinct that we should get medical treatment. Okay na? And that is very important for our life, so that we can keep ourselves healthy and fit. It is also very important for us. So what we have discussed कि writer जो है only focusing on the two things, mentally fit, physically fit. और उसने फर्क बताया कि what is difference between developed countries and developing countries. The developed countries are having a lot of resources. They are having good and clean environment. They are having a lot of money. They can buy all the things which give them comfort. And they are having nutritions. They are having healthy food. Lekin they are physically fit but mentally they are not fit because they have a lack of communication with the people. They are not having good relations with neighbors. They are not having big family. Got it? Joint family they are not having. That is why they are not mentally fit. But in developing countries, maybe we are not having good environment, maybe we are not having nutrition status, maybe we are not having luxurious life, but what we are having what? Relations, communications, family, joint family we are having, friends, socially हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. That is the big difference. तो कह रहा है कि दोनों चीज़ें प्राप्त करनी जरूरी होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में दोनों चीज़ें मिल सकती हैं हमें. कैसे? इफ वी आर मेंटली फिट देन वी कैन कीप अस आवरसेल्व्स फिजिकली फिट. लाइक वी कैन मेक आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन. हमारे सराउंडिंग को साफ रख सकते हैं. एब्सोल्युटली. एंड वी शुड नॉट टोटली डिपेंड ऑन द मेडिसिन्स. वी कैन मेक आवर होम रेमेडीज सो दैट वी कैन फार फ्रॉम द डिजीज. ये भी नहीं है कि जो चीज़ बस की नहीं है वो डॉक्टर के पास जाए नहीं. यस, जब जरूरत पड़ती है वी शुड गो. लेकिन कभी कभी क्या होता है, घरेलू उपाय से भी हम ठीक हो सकते हैं. इज इट क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस
चैप्टर कि ये होता है मेंटली और फिजिकली फिट होना। अब सुब्रत दत्त है, शी ऑल्सो वेरी वी कैन से फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स कि प्रॉपर मेडिकल की केयर चाहिए हमें सर्टेन सर्कमस्टेंस, एक निश्चित परिस्थितियों में। ये नहीं है कि हम उस डॉक्टर हमें बता रहा तो हम उसको ले नहीं रहे। वी शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, वी शुड टेक द मेडिसिन रेगुलरली, वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर एंड वी शुड मेक अ स्ट्रॉन्ग, और इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। Got it or not? We should make our immunity system also strong so that we can keep ourselves fit and fine. So maternal care before the birth of the child and after the birth of the child, कि उसकी जो mother होती है, how many maternal cares we should be given to the mother, okay ना, so that can also help the child to be fit and fine. Is that clear? Immunity system जैसे कि आजकल हो रहा है, the people are living in the villages, they are coming from the cities to live in the village because we are having nice surrounding, we are having we can say healthy environment. Got it or not? So आज इतना ही होगा and tomorrow we will discuss more about that. Thank you.